you, what is my position right now? You can easily answer that, ma'am, you are at rest. You are at rest, right? And if I ask you again whether I am moving or not, you can easily give me reply that, ma'am, you are not at all moving. Agree? But situations, this is a very simple scenario where you can easily say that you are at rest and you are not moving. But there are situations where we need to think twice. We need to give a thought whether a body is moving or body is at rest. So in this chapter we will discuss all this scenario in detail. Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel Study Hub with Radhika Mahajan. So today we are going to start with our first topic, that is history of transport. How transportation or how transports get developed over a time. In ancient time, when we talk about ancient time, people used to travel on their foot. They move from one place to another on foot, or they use their animals for carrying goods or for traveling purposes, right? But with the passage of time, what they did, they just tied up, they just collected the logs of wood and they tied it up and give it a shape of a boat. They take a help from they take an idea from a fish, that how streamlined shape of a fish help it to swim. So what they did, they make a boat and they make it hollow from center so they can put their goods, they can people can move easily through water route, or they can travel from one place to another through water bodies. Then there was an invention of a wheels. It was a very revolutionary time in the history of transport, because what people start doing, they start using a wheels for making a carts. They are done with the they start making a bullock cart, they start making a camel cart, and they travel from one place to another with the help of these carts. What happened in cart से क्या हुआ, in cart से क्या हुआ कि time of transportation get reduced. It becomes comfortable for them to travel from one place to another. Now then, after that there was an invention of steam engine. Steam engine का invention हुआ. steam engine से चीजें और आसान हो गई, ट्रैवलिंग पार्ट और इजी हो गया, फास्टर हो गया, राइट? फास्टर एंड कंफर्टेबल, यू कैन से ह्यूमन पावर, ह्यूमन एनर्जी का जो यूज है वो कम हो गया. देन देयर वाज एन इन्वेंशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, कार, बसेस. ये सब चीजों से क्या हुआ, चीजें ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा आसान हो गया. जो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग था, टाइम जो लगता था ट्रैवलिंग में, वो रिड्यूस होता गया. फाइन. देन वी हैव एन एरोप्लेन्स. एरोप्लेन से क्या हुआ, we can travel from through air route also, air transportation possible hua. So this is how with the time transportation or transportation gets developed, right? Now after the history of transport, we will proceed to our next topic, that is motion. You can easily see here that here is a school and there is a bus standing outside the school at the position A, right? This school is at rest. ये इसके पोजीशन क्या है, रेस्टिंग मोड है. यहाँ पे वैन की, बस की पोजीशन भी रेस्टिंग मोड है. बट जब हम इस पर्टिकुलर बस की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे तो वी आर गोइंग टू रेफर समथिंग इन सराउंडिंग. हम उसकी सराउंडिंग में कुछ देखेंगे. हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे स्कूल है जो रेस्ट पोजीशन पे है, तो इसको क्या हम कह सकते हैं, इसकी सराउंडिंग में हमने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया है.
स्टेशनरी मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट. अब ये कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई ट्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो हमने इस पर्टिकुलर बस की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इसकी सराउंडिंग में क्या देखा कि एक स्कूल है, फाइन. इसको हमने क्या बोला, स्टेशनरी पॉइंट, राइट. अब इस स्टेशनरी पॉइंट को हमने क्योंकि रेफर किया है, तो इन साइंस टर्म्स वी से दैट दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट. दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट. ये रेफरेंस पॉइंट हमेशा व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब any object, any body motion, then you have to consider one reference point which remain at rest. ये स्कूल की मूवमेंट नहीं होगी. अब आप आगे देखेंगे that now this school bus start moving and it reaches to point B. अब ये B point पे क्या हुआ, this body, this particular bus covered some distance, right, with time in relation to its surrounding. अपनी सराउंडिंग को देखते, अगर रिलेशन में मतलब हमने सराउंडिंग को ही देखकर एक रेफर कर एक कंक्लूजन निकाला कि इस पर्टिकुलर बस ने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है. सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि बस ने जब ए से बी पे बस गई तो बस ने एक डिस्टेंस कवर किया, राइट. वो डिस्टेंस विथ टाइम हुआ इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग. सराउंडिंग में जो जिसको हमने कंसीडर किया, जिसको हमने रेफर किया, दैट इज नोन एज अ रेफरेंस पॉइंट. सो हियर रेफरेंस पॉइंट इज अ स्कूल. Fine. So can we say that earlier the body was at rest at position A. Now body covered some distance with time in relation to its surrounding. Clear? Now we can say that reference point क्या होता है, reference point मतलब जो surrounding में any point, any place, anything which you refer while defining a motion of anybody. आप किसी भी body का जब motion को या state of motion या state of rest को define करते हैं तो उसकी surrounding में आप किसको refer करते हैं, that is known as a reference point. Now we are coming to next topic, that is rest. Rest की जैसे कि हमने देखा at point A school bus was at resting mode, at rest. जब body ने अपनी position change ही नहीं की with time in respect to surrounding, तो हम बोलते हैं कि वो body अभी क्या थी, रेस्ट पे थी, क्योंकि उसने कोई पोजीशन चेंज ही नहीं की. और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम कर ही चुके हैं. स्टेशनरी मतलब जो चीज स्टिल है. तो जब आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो आप हमेशा वो पॉइंट लेते हैं जो स्टेशनरी है, जो रेस्ट पे है, राइट. नाउ we can see that in our surrounding there are so many things which are at resting mode. Suppose an house, tree, any object, any pole, electric pole, etc. Our next topic is how we can define, how we can conclude motion. Motion क्या होता है, when a body changes its position with the time. जब body अपनी position change करती है time के साथ और with respect to its surrounding, in respect to its surrounding के according, तो that is known as a body is doing motion. Fine. Now we can see number of things which are in motion in our surrounding. हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जो motion करती हैं. Suppose we have an example of a flying aeroplanes. We have minutes of a clock are moving continuously, right? Flying balloons, we know that earth is moving around sun, moon is moving around earth. So these all bodies are doing motion because why, मैं यहाँ पे conclude करती हूँ क्योंकि अपनी position change करती हैं with the time in respect to their surroundings. Fine. Now we proceed further. There's a question, is it possible to observe movement every time? क्या ऐसा पॉसिबल है आप हर एक बॉडी की जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व कर पाए हमेशा? नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. हम सब चीजों की जो हमारी सराउंडिंग में है उनका मोशन हमेशा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट बर्ड्स आर फ्लाइंग, इंसेक्ट्स आर मूविंग, राइट. बट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मिनट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन आवर एंड ऑफ ए क्लॉक. आप आवर एंड की मूवमेंट को
you cannot observe that movement because that movement is very slow. तो जहां पे object slowly move करते हैं, we hardly observe that movement. Fine. Now we proceed further. Whether you can say body is at rest or motion. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. यहाँ पे हमें एक बार सोचना पड़ेगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोई चीज मूव कर रही है कि नहीं कर रही है. लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन एंड देयर आर को पैसेंजर्स विद यू, नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन द सेम कोच. नाउ व्हाट हैपन इफ you ask a person who is sitting next to you whether my body is at rest or not, or in motion, he can easily say that you are at rest, your body is not moving, you are at rest. Fine. तो उसने क्या बोला कि आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है. बट a person who is standing outside the moving train, that is known as an observer in this particular case, right? He is going to reply if anybody asks him the same question कि वो पर्सन मोशन में है या रेस्ट में है, तो वो कहेगा नो ही वाज मूविंग ट्रेन के साथ उस पर्सन की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है. सो कैन यू सी द डिफरेंस हियर, द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन. तो आपका बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे है, दैट इज डिस्क्राइब्ड कि आपका ऑब्जर्वर कौन है, हु इज ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम वेयर. फाइन. एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग आप रेस्ट पे हो और एक के अकॉर्डिंग आप मोशन में हो. सो कैन यू सी द डिफरेंस हियर. Your observer is going to define your state of motion or your state of rest. Fine. Now we proceed further. We have an athlete running on a circular track. यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं. Fine. An athlete is moving. Suppose an athlete is moving on this circumference of a circle, that is, consider him as a B, and you are standing at the center, that is A. Fine. If I ask you that whether he is doing a motion or not, because why I'm asking this question, because his distance from you at each and every point will remain same. उनका distance आपसे हर point पे, चाहे वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, same रहेगा. तो क्या वो मोशन नहीं कर रहे हैं? He is not moving. Is he moving or not? Yes, he is moving. Why? Because his position and direction is getting changed with respect to an observer. That is you. इस observer के according उनकी क्या हो रही है, position change हो रही है. So an athlete is in motion. We can describe the characteristics of motion here. जो हमने अभी तक पढ़ा हम उसको conclude करेंगे या characteristics बताएंगे. That motion is, first characteristic says that motion is relative. Means एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रेस्ट पे हो सकती है और दूसरे ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी मोशन में हो सकती है. सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम वेयर somebody is observing you. Next one is something is in motion with according to your observer, in relation to your observer. कोई चीज मोशन में है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज करी है with time and in respect to surroundings, right? Now we can recapitulate what all we have done today. We discuss a history of transport, that is how transportation system get developed from wheels to from boat till supersonic jet or aeroplanes. Then we discuss motion. कब बोलेंगे हम कि कोई बॉडी मोशन, किसी बॉडी ने मोशन किया है, that is मूव किया है. कब हम बोलेंगे कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है. कब, और मोशन रिलेटिव है, कहां से आपका ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो डिफाइन करता है आपकी पोजीशन. रेफरेंस पॉइंट, आप हमेशा जब भी किसी की पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे तो यू कंसीडर रेफरेंस पॉइंट इन सराउंडिंग. with this I'm done with my topic, today's topic. In next video I'll come with the types of motion. So please, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, please do like, share and subscribe my channel so that you get an update कि कब next वीडियो में मैं types of motion डिस्कस कर रही हूँ. Thank you.